वेलकम बैक गाइस। तो आइए इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जेपेग भाई किस तरह अपनी कंफ्यूजन को सॉल्व करते हैं, क्लैरिटी लेके आते हैं। एंड ही केम टू मी टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ पैरामीटर्स बिफोर ही कैन रियली क्लोज मिस्टर बजेटिया। एंड उनका भी क्वेश्चन वैलिड था कि व्हाई डू आई गो अहेड विथ यू नाउ एज अ क्रिएटिव folk, even you might be thinking यार ऐसे क्यों पूछ लिया उन्होंने, बट you put yourself in the client's shoe. Okay, there are so many options out there in the marketplace. They have this tons of platforms. You have this so many designers, creatives approaching them. Even clients get confused, like who do I go ahead with? Because it's not like ये कोई ऐसा वेंडर वाला काम नहीं है कि किसी को दे दिया. It's like a partnership that they are having with you, because you will be a partner for their brand and उसको आप बहुत crucial role आप play करने वाले हो. तो client का वो हक है. And many entrepreneurs over here, even I would recommend everyone कि yes, please think over it. Like whenever you are going ahead with any creative freelancer, any creative agency, please be thorough with everything. And देखते हैं कि क्यों वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, हमारा डॉट जेपेग भाई क्यों जस्टिफाई नहीं कर पाया एपिसोड 1 में. एंड एपिसोड 2 में बिफोर गेटिंग द जस्टिफिकेशन वो थोड़ी चीज़ें क्लियर कर रहा है, जैसे कि सेक्टर्स, सर्विसेज, टाइप्स ऑफ एजेंसीज, चैनल्स एंड कमर्शियल्स. ये एपिसोड में हम सेक्टर्स, सर्विसेज पूरी तरह से कवर कर लेते हैं पहले एक बार. चैनल्स कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड है, एजेंसीज और चैनल्स और कमर्शियल्स हैंड इन हैंड जाएंगे, जो नेक्स्ट एपिसोड में उसे पता चलेगा. एंड that will help him find his niche ultimately, because उसके बिना वो justify नहीं कर पाएगा किसी भी prospect को कि क्यों उसके साथ जाना चाहिए, क्यों किसी को भी उसके साथ आगे प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहिए एंड उसी को क्यों काम देना चाहिए, given the noise in the market and so many competition that you see. So in this episode, as I navigate and handhold dot jpeg by, हम it's me speaking to him and clearing. मैंने काफ़ी लाइव प्रोजेक्ट्स इसमें इंटीग्रेट किए हैं, सो दैट कि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ कि क्या है और आगे किस तरह जर्नी कंटिन्यू करनी है. सो आपको इतना पता चला कि जब कोई क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट आपके पास आ रहा है कोई भी रिक्वायरमेंट लेके, यू हैव टू डीप डाइव, अंडरस्टैंड हिज बिजनेस, जिस तरह वी अंडरस्टूड इवोक स्टोर, इवोक प्रिंट्स, and act as an entrepreneur, not just like a designer who can just design a logo. जैसे हाँ ठीक है, evoke prints का evoke कुछ अलग लोगो बना के दे दिया, so no, rebranding करनी पड़े, rebranding suggest करो. So you have learned that so far. Now why do they go ahead with you? But before we realize that, let's understand that what are the sectors. ठीक है, तो अभी जेपेक भाई की बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जगल कर रहे हैं. जगल करोगे तो स्ट्रगल करोगे. लाइक you see so many sectors that we come across, be it real estate. I'll just go through each sectors first. I've tried to jot down as many sectors as I can, but of course इसके अलावा भी मतलब अभी अगेन मैं आपको कोई टर्मिनोलॉजी में कैच नहीं करना चाहता, बट रियल इस्टेट ऑफ कोर्स इज वन ऑफ अ सेक्टर. बिल्डिंग्स बनती हैं, बनती रहेंगी, आगे भी बनती रहेंगी, ये रिक्वायरमेंट आती रहेगी डिजाइनर्स को. आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर्स बहुत बड़ा सेगमेंट है एंड इसमें भी रिक्वायरमेंट्स आ रही है. हम लोग एक एक में भी डीप डाइव करेंगे, पहले गो थ्रू कर लेते हैं. BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, मतलब और एक नया सेक्टर है. लाइक BFSI में मतलब सारा आ गया, फाइनेंस रिलेटेड जितना भी होता है, इट्स लाइक बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, जितना भी है सब आ गया. हेल्थ केयर में हेल्थ रिलेटेड जो जो पॉसिबिलिटीज हैं सारी आ गई. ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर को भी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो एचआर एक हो गया. एंड कुछ कुछ के तो आगे एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक सर्विस सेक्टर है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है. फूड एंड बेवरेजेस, आप चाहे फूड आउटलेट्स कह लो, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स कह लो, या कुछ फूड प्रोडक्ट है तो फूड एंड बेवरेजेस. कोई ड्रिंकिंग प्रोडक्ट है. Travel and hospitality, travel, adventure, it's a big market, though post pandemic it's little still it's leveling up now, and safety measures तो सारे ले रहे हैं. Beverages किस बाद आता है, travel and hospitality. Hospitality also includes your big I mean hotels and the
3 stars, the 5 stars as well. So how do you really brand, design, position something like that? E-commerce, जहाँ पे हमारे मिस्टर बजेटिया डील कर रहे हैं, ई-कॉमर्स और रिटेल. तो ई-कॉमर्स इज जायंट सेगमेंट नाउ. आप देख लो जितनी ब्रांड्स हैं आज सारी ऑनलाइन हैं, सब अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. So anything that you sell online is e-commerce, so business that happens online. You must be aware about it. Retail, anything that goes to the end consumer. Retail outlets, आप जितने भी outlets देख रहे हो, products आप purchase कर रहे हो, चाहे वो offline हो या online हो. So retail. Fast moving consumer goods like Colgate, then toothbrushes, then masalas. तो toothpaste मैंने brand ही बता दी, so Colgate. So yeah, FMCG मतलब जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, हमें डे टू डे लाइफ में ज़्यादा लगते हैं कंज्यूम करने के लिए. सोप्स हो गए FMCG में, रिटेल में भी आ गया वो, बट या सो FMCG एक अपने आप में ज़्यादा मतलब ज़्यादा कहीं कहीं ज़्यादा लोग, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसी सेक्टर्स में इन्वॉल्व रहते हैं. ई-कॉमर्स, रिटेल, FMCG आजकल, मतलब गिवन द डिमांड्स. स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया सेक्टर है अपने आप में, जिसमें आप किस तरह ब्रांडिंग एंड डिज़ाइन डेवलप कर सकते हो. एंटरटेनमेंट को भी उतनी रिक्वायरमेंट होती है. मूवीज़ हो गए, इवेंट्स एंटरटेनमेंट को मैं थोड़ा सा साथ में ले रहा हूँ. इवेंट्स एंटरटेनमेंट दो अगेन, मतलब म्यूजिक, मूवीज, एनीथिंग इन दैट सेगमेंट. इवेंट्स में कुछ भी आप कह लो. ऑफलाइन इवेंट्स हो रहे हैं, अब तो सारे ऑनलाइन वेबिनार्स या ऑनलाइन इवेंट्स जो कंडक्ट हो रहे हैं. तो किस तरह इवेंट्स या आईपीस जो होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, आईपीस जो ऑनलाइन आईपीस बनती हैं वेबिनार्स की, सेमिनार्स की, किस तरह आप उसको ब्रांड कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो. एंड देन NGOs भी आ गए, या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक अपने आप में, मैं सेक्टर तो नहीं कहूँगा बट वो भी आ जाता है कि किस तरह आप NGOs की ब्रांडिंग कर रहे हो. एजुकेशन अपने आप में एक सेक्टर आ जाता है कि आप एजुकेशन सेक्टर में कैसे काम कर रहे हो. तो आप लिस्ट तो एंडलेस है, मतलब लिस्ट आप देखते जाओगे ना तो बहुत एंडलेस है, बट जितनी हो सके मैंने कवर किया. सो प्रोफेशनल सर्विसेज, अभी प्रोफेशनल सर्विसेज में तो आप कह लो कोई फिटनेस है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, कोई डेंटिस्ट है, कोई जिम ट्रेनर है, कोई जिम है. सो एक ग्राफिक डिजाइनर है, एक anything and anyone and everyone is providing some sort of a professional service to their clients. तो अभी मैंने मैप करने का ट्राई किया है कितने सेक्टर्स हैं. अभी हमारी प्रॉब्लम भी कैसी है जेपेग भाई जैसी, कि हर सेक्टर में अभी वन, लाइक व्हेन वी वेक अप एवरी डे वी आर वर्किंग समवेयर और द अदर इन ईच और एवरी सेक्टर. मतलब यू बिलीव इट और नो, बट एज आई से कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट एंड यू आर डूइंग दिस, आप अभी कर रहे हो, अभी आपने स्टार्ट आउट किया है, लाइक यू आर एक्सप्लोरिंग द वर्क इन ऑल सेक्टर्स, इट्स ओके. बट आई गेस इवन इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, आपको अगर आपने मैप कर लिया ना एक बार, आप अभी आपके आंख के सामने सारा मैपिंग है कि मोटा मोटी इसमें चलो एजुकेशन हो गया, फिटनेस हो गया, वो भी आप ऐड कर लो, NGOs हो गए, वो भी आप ऐड कर लो. तो अभी ऐड करते जाओगे तो फार्मा कहीं ना कहीं मैं हेल्थ केयर में ही कंसिडर कर रहा हूँ, बट ठीक है, फार्मा भी आप, फार्मा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल भी आप अलग से ले लो. सो सेक्टर्स तो मतलब बढ़ते जाएंगे. मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इंडस्ट्रीज हो गए, तो सेक्टर्स तो इंक्रीज होते जाएंगे. बट आप जो अभी मैप करके आंख के सामने देख पा रहे हो, जेपेग भाई ने मुझसे पूछा, मैंने जेपेग भाई को जब पूछा कि आप क्या क्या वर्कआउट कर रहे हो, तो उन्होंने बोला ये सब सेगमेंट में उनका काम चल रहा है. तो बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे है कि अब वो क्या हो रहा है ना, कि मतलब मास्टर ऑफ नन है, उस जैक ऑफ ऑल है ये स्टेज में. तो इसलिए उनको दिक्कत आ रही है बजेटिया जी को जस्टिफाई करने में कि व्हाई ही इज द बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट एंड फॉर द जॉब दैट ही इज providing or the gig, I may say. Similarly, अगर आप clients हैं, अगर आप entrepreneurs हैं, तो आप भी इसी में से किसी ना किसी सेक्टर में आते होंगे. तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से एज अ ब्रदर यही होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सेक्टर की या सेगमेंट की जो एजेंसी है, जो इतने सालों से वो प्रॉब्लम सॉल्व करती आ रही है, या उस सेगमेंट या सेक्टर का जो एक फ्रीलांस कमर्शियल आर्टिस्ट है या डिजाइनर है, जो इतने सालों से उस सेगमेंट में काम करते आ रहा है, उसको जो उस डोमेन की इन डेप्थ नॉलेज होगी, वो कहीं ना कहीं आपको मिसमैच दिखेगा
किसी और बंदे में, नो डाउट, मैं डिनाई नहीं कर रहा, फ्रेश आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो होता है कि मैं अभी स्पोर्ट्स सेगमेंट में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स की इन एंड आउट पता है, तो वो आपसे उस मतलब आपसे सिंक्रोनाइज हो पाएगा आपके साथ वो कम्युनिकेशन में, वो आपका समझ पाएगा सब कुछ, या समझ पाएगी आपके प्रॉब्लम्स को। बट वन फाइन डे किसी ने स्पोर्ट्स में काम नहीं किया है, ही मे बी और शी मे बी बेस्ट, एंड उसको आप अप्रोच कर रहे हो, तो आपको थोड़ा उसे समझाना पड़ेगा सेक्टर, उसको रिसर्च में ज्यादा टाइम लग सकता है। सो आई एम नॉट टेलिंग के डोंट डू दैट, ऑल आई एम टेलिंग इज के someone who is a specialist along with being a generalist is the right choice and the right fit for your brand. So उसकी स्पेशलिटी भी होगी वो सेक्टर में, प्लस वो जनरली सब में काम कर चुका होगा, तो उसको एक नैक एंड नो हाउ भी होगा कि हर सेक्टर हर सेगमेंट किस तरह काम करता है। सो व्हेन आई कम टू रियल एस्टेट, एज आई से, रियल एस्टेट सेगमेंट की अपनी नीड्स हैं। आप प्रोजेक्ट की पोजीशनिंग कह लो, प्रोजेक्ट का डिफरेंशिएशन कह लो, किस तरह मैं 1 BHK को, अगर मैं भी 1 BHK बेच रहा हूँ, दूसरा बिल्डर भी 1 BHK बेच रहा है, मैं पोजीशनिंग किस तरह अलग से करूँ मेरे प्रोजेक्ट का, किस तरह आइडेंटिफाई करूँ और पब्लिक तक पहुँचाऊँ मेरा मैसेज कि मैं जो 1 BHK बेच रहा हूँ वो स्मार्ट होम्स है, वो जो 1 BHK बेच रहा है वो उसमें कोई ऐसा फीचर नहीं है, मैं इको फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली एलिमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ मेरे प्रोजेक्ट में, वो ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा, सो सस्टेनेबिलिटी भी नहीं है उसमें। सो इट्स लाइक दैट, कोई बोलेगा मैं टाउनशिप हूँ, कोई बोलेगा मैं मतलब सिंगल कंस्ट्रक्शंस करता हूँ, कोई बोलेगा मैं गेटेड कम्युनिटीज बनाता हूँ, कोई बोलेगा मैं कमर्शियल रियल एस्टेट में हूँ, वेयर हाउसिंग या फैक्ट्रीज या लैंड्स या ऑल दैट, सो एग्रीकल्चरल लैंड। सो रियल एस्टेट में भी अपने आप में बहुत वास्ट एक दुनिया है, एंड तो उनकी जो डिमांड होगी आपसे, सेल्स ऑफिस की उनकी डिज़ाइन हो गई, साइट बाउंड्री की उनकी डिज़ाइन हो गई, उनकी ब्रोशर की डिज़ाइन हो गई, उनका लोगो हो गया प्रोजेक्ट के लिए, साइनेजेस हो गए उनके, तो उनके कैरी बैग्स हो गए जो क्लाइंट्स कैरी कर पाए ब्रोशर के साथ, ऐसी मर्चेंडाइजेस होगी। उन लोग अगर कोई इवेंट रख रहे हैं अपने ब्रोकर्स के लिए सो दैट उनको पता चले, उन लोग कुछ वीडियो बनवाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट का, उन लोग की वेबसाइट है, प्रोजेक्ट की लैंडिंग पेज बनती है, तो इस तरह एक रियल एस्टेट डेवलपर या रियल एस्टेट कंपनी की अपनी डिमांड है। आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर्स, अभी ये फील्ड में मैंने ज़्यादातर देखा है कि ब्रोशर्स जो होते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट्स को भी अटैच कर पाओ, या कुछ टेक्सचर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्चर में जो डील कर रहे हैं, उन लोग ज़्यादातर उनकी तो डिज़ाइन में सोशल मीडिया एनी गिवन डे दे विल नीड, बिकॉज तभी उन लोग अपने सोशल मीडिया तो सबको लगता है वैसे, बट कहीं ना कहीं इंटीरियर डिजाइनर्स को डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है, उनका काम, एंड हाउ आर दे displaying it well with your support is the key. And interiors में भी काफी luxury interiors are different, then someone is into luxury, someone is into affordable, the list goes on and on, somebody is into commercial, uh, somebody is into residential, मतलब कोई architectural company है वो commercial ज़्यादा करती होगी, वो रेसिडेंस में नहीं जाती होगी, कोई इंटीरियर फर्म है वो रेसिडेंसेस ही ज्यादा करती है, कमर्शियल में नहीं जाती है, और रेसिडेंस में भी एकदम अल्ट्रा लग्जरी होम्स करती है। तो मैं आपको छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स देने का ट्राई कर रहा हूँ कि एज अ डिजाइनर या एज अ क्रिएटिव पर्सन आप कितनी चीज़ों से आगे, एक मैपिंग अभी हो रही है हमारी, तो ऐसा इट्स नॉट नेसेसरी कि आप आप बिल्कुल काम कीजिए हर सेक्टर में एक बार, मैं वो ना नहीं कह रहा, बट इवन बाय मैपिंग, इवन बाय गिविंग यू अ फेयर आइडिया, आप ये स्टेज पे भी समझ पाओगे कि नहीं यार, दिस इज नॉट फॉर मी, मतलब मैं इसके लिए, मतलब दिस इज नॉट माई लाइकिंग, और इज दिस माई लाइकिंग, सो लेट्स सी। देन when you come to banking, financial services and insurance, unki requirement is more like newsletters, explainer videos जो उनकी schemes आ रही हैं, कुछ space branding उनकी company में, या कुछ उनके ऐसे फाइनेंस के आउटलेट्स हैं जहाँ पे उनको स्पेस ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो बीएफएसआई मैंने ये कम्प्लीटली मैं आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ, लाइक आप फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस में आइडेंटिटीज बाय डिफॉल्ट, मतलब ठीक है ब्रांडिंग आइडेंटिटीज बाय डिफॉल्ट, बट देन
they'll need company profile to be designed, they will need newsletters and emailers to be designed, so on and so forth. तो उनकी requirement शायद वो brochures ना हो जिसमें and interiors के इर्द गिर्द ही ऐसी फॉर्म्स भी आती हैं जो अलग अलग मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट करती हैं, तो उनको ब्रोशर डिजाइन बहुत स्ट्रॉन्ग और कैटलॉग डिजाइन बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, बिकॉज दैट इज देयर सेलिंग पॉइंट. रियल एस्टेट वालों का सेलिंग पॉइंट इज लाइक द सेल्स ऑफिस वेयर द कंज्यूमर वॉक्स इन, हाउ इज द एम्बियंस, द सेल्स फ्लैट उनका. बट ठीक है, उनका जो डेमो फ्लैट है वो हमारा लुकआउट नहीं है, बट मोर और लेस मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक का अपना एक application है. Healthcare, as far as I see, it's more about what we have done so far as per the experience. It's the standees that they need in clinics, hospitals, the posters that they need for the awareness to the sunboards designs and within the hospitals. So yes, even they need social media, website, वो सब तो by default है, videos if need be. But healthcare, if you are considering pharma, then packaging design is the biggest thing that they need. अगर कोई भी टैबलेट है, ट्यूब है, क्रीम है, दैट्स वेयर दे, मतलब अब ये पैकेजिंग डिजाइन आपको इंटीरियर आर्किटेक्चर में नहीं दिखेगा, आपको इसमें दिखेगा, हेल्थ केयर में, फार्मा में आप ज्यादा जा रहे हो तो वहां पे दिखेगा. तो आपको भी आपका एक स्किल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं ठीक है, आई एम गुड विद पैकेजिंग, आई कैन FMCG and pharma healthcare are my ball games, but not real estate somewhere. If somebody is not that good with packaging but loves when it comes to space branding and all that stuff, so theek hai, I can be great at this. So see your medium, see your liking, see your sector. Then you come to human resources. Human resources will need all internal communication. Internal communication में उनकी ज़्यादा requirement होगी. Internal communication यानी कि anything that you need to share across your internal employees, कुछ ऐसे emails craft करवाने हैं, कुछ ऐसी designs आपको build करनी है जो team के culture को strengthen करे. So within culture, within कल्चर ड्रिवन एंड इंटरनल कम्युनिकेशन ड्रिवन. मतलब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी कि अगर मैं कोई बाहर होर्डिंग लगवा रहा हूँ मेरा प्रोडक्ट बेचने के लिए, दैट्स एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब कि मैं मेरे विज्ञापन का टीम कल्चर स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा क्या ईमेल्स डिजाइन करवा रहा हूँ किसी क्रिएटिव एजेंसी से जो मेरा HR ध्यान देगा, ऐसे क्या इवेंट्स करवा रहा हूँ मेरी टीम कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. सो इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज. लॉजिस्टिक्स देखा, बट आपने देखा इंटरनल कम्युनिकेशन में भी दे आर रिक्वायरमेंट जो ज्यादा हो. देन यू कम टू लॉजिस्टिक्स, एज वी डिस्कस लाइक इवन बिफोर, इट्स मोर अबाउट कार्गोज कि किस तरह मेरे कार्गो पे मेरा बॉक्स, कार्गोज पे मेरा ये पार्सल्स या कार्गोज पे मेरी ब्रांडिंग आ रही है, कंटेनर्स पे मेरी ब्रांडिंग किस तरह आ रही है, मेरा एयर प्लेन है, शिप है, मेरा वेयर हाउसेज है, मेरे जो डिलीवरी बॉयज हैं, मेरे जो ड्राइवर्स हैं, तो उस पर मेरी जो विजिबिलिटी है ब्रांडिंग की वो कैसी है. तो ये जो जितना इम्पोर्टेंट इनके लिए ये टी शर्ट और कैप होगी एक डिलीवरी पर्सन के लिए, उतना इम्पोर्टेंट शायद किसी और के लिए ना हो. दैट कैन बी जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर प्रमोशनल एक्टिविटी, बट फॉर दिस लॉजिस्टिक्स दैट्स अ टच पॉइंट जो दिखता है. कोई बाइक पे जा रहा है उसका ब्रांडिंग दिखता है कि ट्रक की ब्रांडिंग, बाइक की ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वो. तो उसकी अपनी एक डिमांड है. फूड एंड बेवरेजेस में आपकी स्ट्रेंथ है किस तरह आप एक सामने वाले को एक फ्रेंचाइजी, क्योंकि देखो फूड एंड बेवरेजेस में हाफ ऑफ द टाइम्स एवरीबडी इज कमिंग अप विद अ गुड आइडिया, कॉन्सेप्ट, दे हैव अ गुड प्रोडक्ट, एंड देन वो स्केल करना चाहता है दैट आई एम स्केलिंग इनटू 10 आउटलेट्स, 15 आउटलेट्स, 20 आउटलेट्स. तो नॉट एवरी आउटलेट इज ओन्ड बाय देम. मतलब अगर मैं 5 फॉर एग्जाम्पल विज्ञापन कैफे, अगर अब 5 विज्ञापन कैफे हैं तो 1 या 2 का शायद मैं ओनर रहूं. एक मैंने खोला मे बी मुंबई में, एक मैंने ओपन किया दिल्ली में, बैंगलोर या कोलकाता के लिए शायद कोई दूसरे पार्टनर्स आ जाए जो मेरी ब्रांड में इन्वेस्ट करे. तो वो ब्रांड में इन्वेस्ट करते हैं कि इसका लुक एंड फील कैसा है, इसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये क्या कम्युनिकेशन कर रहा है जो पब्लिक तक सही तरह से पहुंच रहा है. देन वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिपी, द प्रोडक्ट, द टेस्ट ऑफ कोर्स, बट सारा उसी पे है. बट हाउ आर यू एबल टू डिजाइन and give them a proper brand asset that
कैन एक्ट एज अ वैल्यूएबल एसेट फॉर देम जब उन लोग फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं एंड दूसरों को भी दे रहे हैं. So how are you crafting that experience? How the interiors will be? How the packaging will be? आपका completely मतलब मेनू का डिजाइन से लेके उसके अगर ऐप है तो ऐप कैसा होगा, अगर फूड एंड बेवरेजेस में भी. सो इसकी अलग एप्लीकेशंस हैं. Travel hospitality, as I see, when it comes to hospitality, when you talk about this luxury hotels and all that, so unki branding is very much important when it comes to brochures and internal branding. Unki jo once you enter that venue, तो आपको क्या एक फील आ रहा है, उनके वहाँ के इंटरनल ग्राफिक्स बहुत, स्पेस ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. Travel, it's more about any outdoor activities that they are doing, merchandise that they can distribute so that their clients can relate with the travel company and brands. So इनकी अपनी, so यहाँ पे आपको कोई ऐसे कार्गो बॉक्सेस नहीं आ जा रहे, पैकेजिंग डिजाइन्स नहीं आ जा रहे. सो आपको लगता होगा ये सब तो बहुत ऑब्वियस है, बट हमने क्या किया है कि आज तक मैप नहीं किया है. मैप करके आप आंख के सामने एक बार अभी आपको जो दिख रहा है, तो आपको आगे क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे किस डायरेक्शन में फोकस करना है. डॉट जेपेग भाई का थोड़ा जो जेपेग ब्लर हुआ है अभी, वो इसीलिए थोड़ा पिक्सेलेट हो गया है. अभी उसको हाई रेजोल्यूशन पे एक्सपोर्ट करते हैं मिल के सारे, राइट. सो देन यू कम टू ई कॉमर्स. नाउ व्हेन यू कम टू ई कॉमर्स का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट या टच पॉइंट होगा उसका ऐप या उसकी वेबसाइट. सो आपका ग्राफिक्स, आपका स्ट्रेंथ व्हेन इट कम्स टू यूआई, or your strength when it comes to the user interface and user experience like UI UX is very much important. And as well as how are you really making the other collaterals like their packaging, उनकी packaging deliver कैसे होगी उनके customers तक, उनकी online presence कैसी होगी, उनका social media किस तरह होगा. सो उनका social media, उनका website, उनकी packaging किस तरह सारी unified है. सो यहाँ देखा आपने वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गई. हॉस्पिटैलिटी, कोई 5 स्टार होटल है, वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके एम्बियंस में जो ग्राफिक्स हैं वो किस तरह वैल्यू ऐड कर रहे हैं. ट्रैवल में यस वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, बट ई कॉमर्स इज जस्ट लाइक द वेबसाइट इज देयर दुकान. अगर उनकी वही ठीक नहीं होगी, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रियली टेक द, मतलब गया कस्टमर गया अगर आपने वहां पे काम ठीक तरीके से नहीं किया. तो देन यू टॉक अबाउट रिटेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग. जो आप मे बी रिटेल ऑफलाइन, लाइक आप देखते हो कि आप रिटेल ब्रांडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. रिटेल ब्रांडिंग यानी डिस्प्ले ब्रांडिंग करनी पड़े आपको कि इफ मुझे ये चॉकलेट्स बेचनी है ऑफलाइन, तो इस चॉकलेट के लिए अलग से कुछ ऐसा आपने देखा होगा किटकैट वाले कुछ अलग क्रिएटिव बनवाते हैं जो शॉप में शॉपकीपर्स लगाते हैं, या डेयरी मिल्क वाले अपने हिसाब से कुछ करते हैं. तो रिटेल ब्रांडिंग जहाँ उनका पॉइंट ऑफ सेल, मतलब जहाँ उन लोग सेल करने वाले हैं उस प्रोडक्ट को, वहाँ उसका डिस्प्ले किस तरह किया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. सो ऐसे कटआउट्स हो गए, स्टैंडीज हो गए, इट कैन बी एनीथिंग, बट व्हाट आर यू, कुछ फैब्रिकेशंस करना पड़ा डिजाइन में. तो रिटेल में आप ऑफलाइन आउटलेट में आप किस तरह, एक अभी एग्जांपल में ऑफलाइन आउटलेट का ले रहा हूँ फॉर रिटेल. रिटेल इज अ वेरी बिग टर्म. अभी रिटेल में एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर तक जाए. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में एनी गिवन डे इट्स योर पैकेजिंग डिजाइन जो आपके प्रोडक्ट को एनहांस करती है एंड प्रॉपरली आप समझ पाते हो कि इस प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, व्हाट डज द टैगलाइन से, उसके इलस्ट्रेशन से. सो FMCG इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग गेम. वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट यस, बट टूयम खाने के लिए मैं उसके वेबसाइट पे तो नहीं जाता. सो या इट्स ओके, आई मीन इफ यू आर जस्ट स्ट्रॉन्ग विद packaging. And then come to sports में how good are you when it comes to merchandise design. Like आपको merchandise design की कितनी अच्छी knowledge है. merchandise मतलब सिर्फ टी शर्ट्स नहीं, जर्सीज में आप किस तरह उसको प्ले कर पा रहे हो. आप जो क्रिकेट के उनके जो क्रिकेट के में भी बैट्स हैं, तो बैट्स पे आप किस तरह ब्रांडिंग कर पा रहे हो. अगर उस बैट को सेल करने का कोई अच्छा एक ऐसा स्टूडियो है जो सिर्फ क्रिकेट बैट्स बहुत
अच्छे क्रिकेट बैट्स बेचता है, तो उसकी स्पेस ब्रांडिंग आप कैसे कर पा रहे हो? इवेंट अगर कोई हो रहा है तो वहाँ पे ऑन साइट ब्रांडिंग आप कैसे कर पा रहे हो? तो स्पोर्ट्स की अपनी एक अलग चैलेंज है, जिसमें आपको थोड़ा सा मर्चेंडाइज एंड ऑफलाइन एंड विजिबिलिटी आउटडोर, जिस पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा. Then entertainment में आप music, movies, gaming, it can be so much. So production houses हैं, before you start any movie तो that the music, the logo, the animation in that logo before any movie starts. The music industry has its own demands. आजकल तो music is day in day out. मतलब म्यूजिक वीडियोस बन रही हैं, ग्राफिक्स लगता है, लिरिक बेस्ड वीडियो बन रही है, ग्राफिक्स लगता है. यू नेम इट. एंड म्यूजिक में हर जगह, मतलब डीजेस अगर उनके हैं, डीजे हैं तो डीजे को आइडेंटिटी डिजाइन लगेगी. म्यूजिक आज इफ नॉट इवन अ डीजे, कोई भी एक म्यूजिक बना रहा है बंदा, उसकी खुद का एक लोगो होगा, पर्सनल ब्रांडिंग होगी उसकी. सो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे. तो एंटरटेनमेंट सेगमेंट में अलग, जैसे आप एक एक सेगमेंट में जा रहे हो, यू सी द पैकेजेस कीप ऑन changing. Then you go to events. Now, when you come to events, your offline and on-site branding comes in the picture. And if it's online now, आप किस तरह maybe पूरी event के creatives कैसे design कर रहे हो, right from welcoming somebody to the event to thanking them, a creative thanking them that thank you for attending this event, to creating graphics for your Zoom virtual background if it's happening online, to creating some graphics for giving some diaries or merchandise for distribution purposes. अगर वो event पे कोई आया तो उसको मिलेगा, जो delivered at their home now these days. So, and अगर on site है तो on site it's like there are hardcore event activation agencies जो इस पे काम करती हैं कि क्या installations हम लोग वो event में लगाएं, किस तरह उसका look and feel होगा. And branding guys, the design guys play their role. So it's a very heavy duty work when it comes to event. But इतने छोटे छोटे collateral होते हैं, मतलब right from your ticket to ID cards to t-shirts to banners to backdrop to a food counter पे कैसे क्या branding होगी. तो event में तो हद से बाहर. It's like a project in itself. एक project आप pick up करो, it's like 1 month वो चलता है and it gives you a good projection कि yes, this is a complete project, rather than just making one visiting card for someone. So you're getting that. So events over. Then professional services. Professional services may, if it's a gym needs space branding, gym needs trainer t-shirts, gym needs bottles and just wo ho. So anything and everything. So here the ball game changes. If it's a nutritionist, a clinic will need space branding very first. Everything I'm talking apart from just identity design, मतलब सिर्फ identity is not ठीक है. आपने I'm talking identity, I'm not just talking logo. आपने logo design कर लिया, ठीक है, but you need to have a know-how of the sector, the mediums used in that sector, and how are you really specializing yourself or selecting the few sectors for yourself and then taking things further. So अभी जेपेग भाई का प्रॉब्लम यही है कि वो जगल करते जा रहे हैं एंड हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा उन्होंने काम किया है. Thus he was not able to justify Mr. Budgetia. Given he was a pro in e-commerce maybe, and the market knew him के as a guy, अगर आपको e-commerce में कुछ भी करना है, he is the guy for you. So half of the business development would have been done through your image that you build in the market. जिस पे हम, जैसे हमने लास्ट जो पिच एंड करी थी उसमें कहा था कि how are we repositioning ourselves. So let's go in depth, let's see. So I hope you are clear with the sectors that we are talking about. And अभी इसमें इन डेप्थ तो अभी जैसे मैंने कहा छोटी छोटी तो बहुत सी चीजें हैं, बट मैंने आपको एक एक टच पॉइंट दे दिया जो मुझे लगा कि मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि यार रियल एस्टेट में ऑफ कोर्स यू डोंट नीड पैकेजिंग, तो यू नीड दिस. आर्किटेक्चर इंटीरियर में यू नीड ब्रोशर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. खास करके इंटीरियर में कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो पैनल्स एंड टेक्सचर्स एंड एक्सेट्रा अगर कुछ बेच रहे हैं. तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में यू नीड skills when it comes to profile design, designing explainer videos for the scheme, anything.
हेल्थ केयर में अगर फार्मा में जा रहे हो तो पैकेजिंग डिजाइन इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट, टैबलेट्स, ट्यूब्स एक्सेट्रा. ह्यूमन रिसोर्सेज में इंटरनल कम्युनिकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. Logistics etc. में your outdoor this containers, your cargos, your t-shirt and caps and etc. Food and beverages में you have, depending on the stuff, like, but mostly quick service restaurants या ऐसा कुछ है तो पैकेजिंग आता ही है, उनमें भी डिलीवरीज होती हैं. along with that, food and beverages में it's important how are you developing the complete experience and brand asset कैसे बन रहा है, मतलब आइडेंटिटी क्या है, स्टोरी टेलिंग क्या है, उसकी आउटलेट में कैसा लुक एंड फील होगा, सेम लुक एंड फील किस तरह दूसरे आउटलेट्स में कंटिन्यू किया जाए. Hospitality में it's like if there are 3 stars 5 stars, ambience is important rather than website. So travel है, travel में how are you really doing some quirky stuff जिससे आप अपने clients के साथ relate कर पाओ, and on location branding कैसे कर पा रहे हो, maybe a door tag. So depends, and you might travel, you might see those graphics. E-commerce, of course, website is the my बाप. So आप website पे किस तरह workout कर पा रहे हो. Retail, FMCG, पैकेजिंग ज्यादा आता है. रिटेल, अगर ऑफलाइन रिटेल आउटलेट की मैं बात कर रहा हूँ तो रिटेल ब्रांडिंग मतलब आप डिस्प्ले ब्रांडिंग में कितने स्ट्रांग हो, किस तरह आप अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हो वहां पे. बट जैसे अब ई कॉमर्स ज्यादा टेक ओवर कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ऑफलाइन डिस्प्ले ब्रांडिंग ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत हो रहा है बट कंपैरेटिवली कम हो गया है. एंड जस्ट गिविंग यू अ सिनेरियो, sports, how good are you when it comes to its merchandise design any given day, and couple of other collaterals that the sports company may need. And entertainment में if you see, go to music production houses, you see logo animations, बहुत important. आपका शायद उसको पैकेजिंग ना है जो उसमें स्ट्रांग है, बट उसका लोगो एनिमेशन बहुत की कैश है. he knows the storytelling, he knows the editing very well. So that's how he is doing very well in the entertainment and music sector. Events, he knows the in and out. Events are too TAT driven, मतलब टर्न अराउंड टाइम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए when you are working with event industry, because कभी कभार आपको ग्राफिक्स विद इन शॉर्ट स्पैन आप कैसे प्रोड्यूस कर पाते हो, बिकॉज प्लान्ड होते हैं इवेंट्स बट स्टिल यू नीड टू कीप अ स्पेस फॉर सम नेचुरल पैरामीटर्स. देन प्रोफेशनल सर्विसेज में जैसे हमने, सो इट द लिस्ट इज एंडलेस, बट if you really take your time out, take a paper and pen, jot down these sectors, write the touch points that we discussed, then think over it कि आपको क्या किस तरह अभी जो हमारा JPEG ब्लर है वो थोड़ा अभी हाई रेजोल्यूशन क्लियर होते जाएगा. now similarly sectors तो हैं but services भी हमारी इतनी, like we come across so many services in our day-to-day lives, like जो हमसे expect की जाती हैं to deliver the client. Now in these services I've mentioned, as a designer, as a brand designer, or as a creative, like I'm keeping things limited to this जो हम still tackle कर रहे हैं, नहीं तो endless services हैं like tech, AI, AR, VR, etc. ये सब पे मैं अभी नहीं जा रहा. Like if somebody is thinking on that lines, it's just like as a designer, as a creative person, you will tackle with many queries. Like once you start with copy, like everything starts with copywriting. Copy मतलब के for the entrepreneurs out here, copywriting is a very strong thing. अगर आपको अपनी ब्रांड का मैसेज कम्युनिकेट करना है, विजुअली तो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसको आप वर्ड्स में कितना बेहतर तरीके से समझा पाते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. And here I have this a single, like I have tried to with each service मैं आपको रियल टाइम कुछ मेरे ही एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ. रियल केस स्टडीज हैं हमारे कुछ क्लाइंट्स के, एंड हर टाइप के हैं वो. आप जो आगे काम देखोगे, एक आप एंटरप्रेन्योर का भी देखोगे, जो एक एंटरप्रेन्योर है, स्टार्ट किया है तो उसकी कैसे करी है. कुछ ब्रांड्स भी आप देखोगे उसमें कि कुछ ब्रांड्स का काम हमने किस तरह किया है. कुछ आप उसमें स्मॉल मीडियम कंपनीज भी देखोगे, कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज भी देखोगे. तो वंस यू सी यू विल हैव दिस. सो इट्स अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस भी है, मतलब क्या क्या. सो इट्स ऑल देयर, बट इसको हमने मैप किया है सो आपको पता चले. सो एज एन एंटरप्रेन्योर यू विल एक्सपेक्ट कि जिसके साथ मैं काम करूं उसकी कॉपीराइटिंग स्किल्स, उसकी आर्टिकुलेशन स्किल्स और उसका थॉट बहुत
clear हो. तो ही, and sometimes people have this confusion again, chicken and egg, copy comes first or design comes first. I believe idea comes first. So idea आती है तो कुछ डिजाइन बना पाऊंगा. तो आइडिया आई तो अगर मैं लिख पा रहा हूँ उसको, मैं आइडिया को आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ, ग्रेट, देन इट विल हेल्प मी इन द विजुअल, किस तरह इसको अभी मैं विजुअली प्रेजेंट करूँ. अ केस ओवर हियर, like this is a real estate client. So the brief was के हमारा जो साइट है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे है वो रेडी है, एंड साइट जहाँ पे है उसके ऑपोजिट ही हमारे कुछ कॉम्पिटिटर हैं. तो वो कॉम्पिटिटर मतलब कुछ ना कुछ ऐसे रिबर्टल कम्युनिकेशन करते रहते हैं. रिबर्टल मतलब कि आपने थोड़ा कभी उसे छेड़ा, उसने कभी आपको छेड़ा. सो कंपटीशन होते रहता है. सो इस कंपटीशन में क्रिएटिव एजेंसीज, क्रिएटिव पर्सन को बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ आना पड़ता है टू रिस्पॉन्ड एंड रिप्लाई. आपने देखे होंगे काफी ट्विटर जाइब्स चलती रहती हैं आजकल. तो ये हमने किया था हमारे इस क्लाइंट के लिए RM1. एंड सो द केस वॉज के ऑपोजिट एक साइट है एंड साइट पे कुछ काम हो रहा है, एंड उन लोग ऐसा कह रहे हैं, उन लोग ने क्या कर दिया था कि हमारा जो प्राइस है वो भी उन्होंने भी वही प्राइस रख दिया था, एंड हम लोग उसी प्राइस में ज्यादा ऑफर कर रहे हैं बट उन लोग उसी प्राइस में ज्यादा ऑफर नहीं कर रहे हैं. सो इट वाज लाइक द दाम, मतलब उनका दाम है वही लेकिन दम नहीं, मतलब दाम वही दम नहीं. तो दिस इज द आइडिया दैट वी थॉट ऑफ के चूज वाइजली, स्टे विद RM1. मतलब दाम शायद वही होगा, वो भी अगर आज 25 रुपए में बेच रहा है तो मैं भी 25 रुपए में बेच रहा हूँ, बट मैं 25 रुपए में आपको 5 चीज ज्यादा दे रहा हूँ, वो आपको वो नहीं दे रहा है. तो दाम सीधा उनके ऑन द फेस इट वाज प्योर लाइक पॉम्पस ऑन द फेस विद फिंगर पॉइंटिंग. उनका दाम है वही लेकिन दम नहीं. चूज वाइजली, स्टे विद RM1. आपने देखे होंगे ब्रांड्स लाइक जोमेटो आर डूइंग दिस, एंड जोमेटो की कॉपी बहुत स्ट्रांग होती है जितना मैंने देखा है. डंजो आजकल कॉपी में बहुत स्ट्रांग, लाइक डंजो तो एनी गिवन डे. सो एनी देयर आर मेनी ब्रांड्स हु आर वेरी मच strong when it comes to their thought and copy, and copy is the hero in the graphic. मतलब अगर कोई कैंपेन या डिजाइन बन रही है, so copy is the hero in that. इसमें आप कोई ऐसा आर्टवर्क एज सच नहीं देख पा रहे होगे, बट वी हैव गिवन द वेटेज एंड इम्पोर्टेंस टू द कॉपी राइटिंग के इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिले. So this is a service which people need in the day-to-day marketplace, and how good are you with that is important. And even if like ये दाम वही दम नहीं, आप नहीं लिख पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, it's okay, but at least thought ideas are important as a designer. And ये सेशन में तो आगे हम anyways level up करने वाले हैं copywriting पे भी, so we will come on that because I want you guys to level up in copy and ideas. Just graphics won't help. Then you talk about identity design, everybody knows, so it's okay. यहाँ पे ProCounts करके एक, now this is a company जो आज, this is a company जो है काफी सालों से, and not just a startup. ये जो company है वो a startup. So ProCounts, in ProCounts you see we have smartly incorporated the human figure in the letter O to reflect their strong USP of deploying accountants on demand. एक उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था हमने पकड़ लिया कि उन लोग अकाउंटेंट डिप्लॉय करते हैं. मतलब जैसे मैं अगर एजेंसी चला रहा हूँ, 5 लोग मेरे पास टीम में है, मैं हूँ, मुझे अकाउंट्स तो देखना पड़ेगा, बट मैं खुद ही इतना केपेबल नहीं हूँ कि अगर मैं एक और अकाउंट्स वाला हायर करूँ, अगर वो मुझे रिपोर्ट करे तो मैं एक ग्राफिक डिजाइनर मुझे रिपोर्ट करेगा तो मैं उसको समझा सकता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ये सब्जेक्ट मेरा ही नहीं है. सो प्रोकाउंट्स क्या करेगा कि मेरी ऑफिस में एक अकाउंटेंट भेज देगा जो कंट्रोल प्रोकाउंट्स ही करेगा, वो मुझे रिपोर्ट नहीं करेगा, बट मेरी ऑफिस से मेरे आँख के सामने बैठ के वो मेरा काम करेगा. सो दे डिप्लॉय अकाउंटेंट्स ऑन डिमांड एंड डूइंग गुड. सो वी सिंपली थॉट कि ये ह्यूमन एलिमेंट ऑफ डिप्लॉइंग अकाउंटेंट्स शुड बी शोन. इट शुड नॉट बी जस्ट अनदर फाइनेंस कंपनी जो ग्रोथ या प्रॉफिट्स या ये सब की बात करे अकाउंट्स में. So you know numbers and percentage and ठीक है. So we rather went ahead with the human element. How can we show? So PROCCOUNTS, O के नीचे एक बस element add करने से the human character got developed.
एंड जो उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है कि मैं आज क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो this is how identity design, and you saw here also strategy came in picture. Here also strategic thinking came in picture. Emailers. Mm, now this is related to HR. Matlab, this was like what? BFSI. This was real estate. This is BFSI. This is HR. HR में like Aditya Birla Group is fine, but under for them, like they already had this concept of life unlimited, your friend, guide and confidant. लाइफ अनलिमिटेड एक प्रोग्राम था जो लाइफ अनलिमिटेड एक ऐसा प्रोग्राम था जो इंटरनल कम्युनिकेशन और हमसे इंटरनल कम्युनिकेशन चाहता था. दिस वाज ऑलरेडी क्रैक्ड बाय देम. लाइफ अनलिमिटेड, योर फ्रेंड, गाइड, कॉन्फिडेंट, दिस इज देयर कॉन्सेप्ट आइडिया. दे नीडेड कम्युनिकेशन फ्रॉम आवर साइड. ईमेलर्स डिजाइन करवाने थे. तो वी डिड नॉट सिंपली से कि हाँ ठीक है ईमेल्स डिजाइन कर देंगे, यू गिव अस दिस, वी डू दिस. नो, वी वेंट अहेड. We thought क्यों नहीं दो characters develop करें. So we developed this characters Lee and Unlee. Like Lee inspired from life and Unlee inspired from unlimited. So how these characters become your friend, guide and confidant. Like the male member, like you can either talk to Lee if you have any problem, or you can talk to Unlee if you have any problem. So we gave this Life Unlimited program a human, we humanized the communication. Why we humanized the communication? Because when you are in trouble, like when people work in an organization, somebody has shifted from like we have an example over here. Somebody shifted from a new city, and so he's missing someone. Somebody is feeling that my team members don't like me much. So in corporate environment, when you work in organizations, काफी पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं. किसी को शिफ्टिंग प्रॉब्लम्स है, किसी की कुछ और एंजाइटी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है. सो यू नीड समवन टू टॉक टू. तो गोइंग टू एन एचआर फील्स लाइक कि यार एक तो वो कंफर्टेबल नहीं होते कुछ लोग, और गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट इफ दे हैव केप्ट इन अ कंपनी, तो वी फील कि मैं पागल तो नहीं, मतलब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ. सो पीपल आर नॉट ओपन टू दैट आइडिया वेरी मच. इसके लिए क्या किया गया कि हमने ये क्रैक किया कि आप ये चिंता मत करो कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो एज इफ कि आपका कोई प्रॉब्लम है, या आप किसी एचआर के पास जा रहे हो कुछ फॉर्मल प्रॉब्लम लेके. You are going to your friend. Either you go to Lee, either you go to Unlee. So we developed these characters, and the communication was little comical. And this comical communication used to run across their internal email campaigns. जिसमें फिर this communication was well appreciated by everyone. So it is not just designing the newsletter or the emailer. So it is going in depth, अंडरस्टैंडिंग कि ओके ये पब्लिक को ये प्रॉब्लम आ रही है. मतलब स्ट्रैटेजी खाली आइडेंटिटी में नहीं. आप अब तक स्ट्रैटेजी खाली आइडेंटिटी में देख रहे हो कि हाँ ठीक है किस तरह मैं इसकी लोगों को डिजाइन कर सकता हूँ, बट आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग मुझे हर कोलैटरल में, हर कम्युनिकेशन में चाहिए. जैसे ईमेलर भी है तो एम्प्लॉयज हैं, इनके लिए है. एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या साइकोलॉजी के पास जा रहा हूँ तो पागल तो नहीं, क्या मैं एचआर के पास जा रहा हूँ तो मैं कंफर्टेबल नहीं, उससे मैं मेरी क्यों बातें शेयर करूँ. तो किस तरह मैं एक ऐसी हेल्पलाइन क्रिएट करूं या ऐसा एक. सो बाकी सब तो उन्होंने कर लिया था. दिस वाज नॉट आवर आइडिया टू कम अप विद लाइफ अनलिमिटेड, बट दे डिड दैट. नाउ दे जस्ट नीडेड दिस टू बी कम्युनिकेटेड वेल. सो Lee and Unlee became characters. Even if you chat, if you want to chat, like you are not come, so you have an app, you have that Lee comes up, Lee आपसे communicate करेगा, Unlee comes up, Unlee आपसे communicate करेगी. So as in when you want to communicate, you can communicate with them and consider them as your friend and guide, and not someone you go to when you are not all right. So इस तरह email campaigns करी गई. Then you come to packaging design as a service. So you have this, आपको copywriting skills, आपकी identity design includes everything. यहाँ पे just एक ये है output, but of course your complete branding process. Emailers has email designs that you guys do. इसमें भी HTML भी होते हैं and static आजकल तो नहीं है. HTML यानी but it's okay, like designers are required to do their role, and HTML emailers, you go to MailChimp. आप अगर MailChimp पे जा रहे हो,
अगर आप मेलचिम्प नहीं भी यूज कर रहे हो, जो क्लाइंट है क्या यूज कर रहा है उस पर डिपेंडेंट है, बट वो क्रिएट करना उसका काम है। मतलब किस तरह वो इंटरैक्टिव हो सकता है ईमेल। HTML ईमेलर्स आर जिसमें थोड़ी सी आपको HTML की स्किल्स लगेंगी, बट आजकल तो ऐसे मेलचिम्प जैसे काफी ऑप्शंस आ गए हैं जिसके थ्रू आप डिजाइन कर सकते हो, एंड यू कैन क्लिक थिंग्स लाइक यू कैन कॉल, यू कैन डू, यू कैन गो टू सम पेज, तो वो उसी एक ईमेल में आप क्लिक कर सकते हो चीजों को। इट्स नॉट अ स्टैटिक graphic that comes to you, just explaining. So you need that sense as well. See, now when emailer comes in the picture, when you talk about packaging design, अब ये सारा JPEG भाई सब समझ रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है कि हाँ यार मैंने ये ऐसे ऐसे काम किए हैं, तो एज अ डिजाइनर मैंने डिजाइनिंग के काम किए हैं, बट स्टिल व्हाट इज द एक्स फैक्टर इन मी? सो लेट्स सी packaging design. Packaging design में this product which you see over here now, Hira and the diamond is the logo is not done by us. Not in every case client will come to you for logo. अभी इनके केस में उनको नहीं चेंज करना था, उनकी डिजाइन थी ऑलरेडी लोगो की, उनको जस्ट पैकेजिंग डिजाइन चाहिए थी। तो what we did, we created this concept of a genius in a nutshell, like it was a walnut product. Now why I am explaining you this case studies, because आपने देखा ईमेलर में भी कैसे स्ट्रैटेजी की, आपने देखा पैकेजिंग में भी हम किस तरह अभी स्ट्रैटेजी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो पैकेजिंग में भी अभी हीरा वॉलनट कर्नल्स कैलिफोर्निया, दैट्स देयर प्रोडक्ट। We went ahead with the Babus font because of course Hira has the Babus in it. Let's extend and maintain the consistency. So walnut kernels, but दूर से भी आपको एकदम visible दिख रहा है प्रोडक्ट क्या है। So अगर वो शेल्फ पे पड़ा है दूर, तो I can see one अखरोट या walnut दूर से, and I can see walnut kernels. So मुझे अखरोट लेना है, मैं अखरोट लूंगा। That's it. It's that clean, no clutter. And बाजू में you see some imagery patterns. The pattern is extended on the top. ये पैकेज भी ऐसा होना चाहिए, वो भी हमने मिलकर डिसाइड किया। देन बाजू में उसके सारे फीचर्स लिखे गए हैं, लेफ्ट राइट बैक। सो दिस इज लाइक योर कंप्लीट पैकेजिंग डिजाइन, बट अ जीनियस इन अ नटशेल वाज appreciated. Why? Because a walnut looks like a brain if you look closely. अखरोट एक ब्रेन की तरह दिखाई देता है, तो अखरोट और ब्रेन मुझे बहुत क्लिक कर गया। एंड वो क्लिक कर गया तो हमने वो दिमाग खोल देना, मतलब दिमाग खुल जाए, ये खाओगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आपका ब्रेन बेटर फंक्शन करेगा। एंड दैट अखरोट और वॉलनट itself looks like a brain. So we just played with that real-time Akhroat illustration. You can see a PNG over there with the bulb concept, so that it feels ke once you eat this, and it's a genius in a nutshell. Matlab, the product is genius, the brand is genius. In a nutshell, it's genius. In a nutshell, like it's of course in a nut. It's a nut and in a shell. So a genius in a nutshell. तो इसी तरह बाकी सब ठीक है। मतलब now here's what this is what will differentiate you. The genius in the nutshell will differentiate you from the other packaging designers. Here the Lee and Unlee characters will differentiate you from the other designers in the room. Here the way you communicated, rather than going ahead with those success logos or अकाउंट वाले ना, तो अकाउंट वाले फाइनेंस वाले सबसे पहले वही ग्राफ चाहिए होता है उनको लोगों में, फिर कुछ तो वही सब लीग में होता है, मतलब बार्स होते हैं, ग्रोथ ग्राफ्स एक्सेट्रा। सो rather we went a different route. So take a different route is what we are trying to learn over here. There is no like, see, whatever we are presenting, it can be much more better. Like I'm not telling के ये मतलब मैं बेंचमार्क सेट नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरा काम है ऐसे करो, मैं वो नहीं आपको कहने का ट्राई कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल हियर दैट दिस आर द सर्विसेज, बट इन एवरी सर्विसेज व्हाट द अप्रोच शुड बी। आई वांट योर अप्रोच to be like this in any service like we are going like we are studying here right now. Here you understood the sectors and you understood the touch points in the sectors. यहाँ पे you have to understand the service and your approach towards that service very well. So now we come to packaging design, a genius in a nutshell. You the अखरोट and brain and the illustration, still keeping it clean, दूर से भी visible हो. So here's the packaging design for you. इसमें अगर आइडेंटिटी भी डिजाइन करने मिल जाती तो मजा आता, थोड़ा कुछ और
उसके अकॉर्डिंगली कर पाते हैं. बट नो स्ट्रेस, वी स्टिल ट्राई टू मेंटेन द पैकेज ऑल्सो लाइक दैट, जो उसके कट्स और उसके ट्रायंगुलर शेप्स के साथ जाए, तो कंसिस्टेंसी है. Then we talk about again like company profile, the HR again कि किस तरह SK Talents और SK Shah Kapadia Associates, one of like now ये जो है वो मतलब वो client है जिनको branding भी नहीं पता थी, and then how we consulted, and now it's been like since 3 years plus we are together, and of course we'll always be. So company profile is different and brochure is different. So company profile is a profile which showcases all your services. So what is your vision, your mission, what are your services like? So how are your layouting skills is very much important. In the cases you get content and copy from the client, but in some cases you have to be that person who does the copy and content work also for them. I'm not telling you do it on your own, but if you collaborate with somebody and do it, or you can upskill yourself and do it, like of course आप दोनों कर सकते हो. But आपका strength अब यहाँ पे आएगा layouting. How good your layouting skills are, how good your interpretation skills are, because आपको content का significance तो पता होना चाहिए कि प्रोफाइल में कौन सा कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट नहीं है. So accordingly you give the weightage to that paragraph or a bullet point. You just don't copy paste something. And how are you making it interesting with imagery, illustrations? That's your. So I was unable to put the complete profile over here, but somewhere I'm giving you this idea के किस तरह हम कर सकते हैं, right? So it's all dependent on how strategically you are approaching the project, unlike everyone else. But yes, we all will level up now. So going ahead with the company profile, it's just like 2 pages which we have incorporated. Of course, the profile is 8 to 9 page, 8 to 10 page. Usually, company profiles होती हैं किसी भी companies की, and it all starts with what the company is all about, what is the vision, mission, their values, what are the services like, उनके testimonials क्या हैं, उनके clientele कौन है, who are the team, and how you can reach out to them. तो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपनी प्रोफाइल का. So I'll try to give you some mandates in my deliverables, like so that you guys know के किस तरह एक अप्रोच आपको करना पड़ेगा जब and in your journey you will go through all this services is what I believe. And brochure. So brochure ये मैंने real estate again यहाँ पे, so you will see more of finance and corporate and real estate work. But yeah, so that's how I have focused on like मेरा मैंने एक focus वैसे catch किया हुआ था. So yeah, in brochure, the brochure is all about storytelling, किस तरह आप अपने project को अच्छे से दिखा पा रहे हो. It depends on the requirement. Catalog है, product है. So a profile is the company related information. Brochure is that particular product or anything that you want to show in that. So यहाँ पे I've just put this cover of this luxury brochure that we made for one of a client, MICL, Aradhya Groovescape. So बहुत इंटरेस्टिंग है. इसकी तो मैं कैंपेन भी आपको एक बार अभी डिस्प्ले करता हूँ इन दिस कंप्लीट सेशन. बट so this is how you will understand how an identity once developed gets extended further. So extension strengths are very much important. Book cover, you may have to design some book covers maybe in your life. तो आप देख रहे हो अभी हर चीज अपने आप में एक अपनी चीज है. So it's not just design. So diaries आ गए, आप calendars design कर रहे हो. It can be anything. So the con in you. So somehow we try to शो द कौन, मतलब एक आपके अंदर छुपा हुआ राक्षस. तो आपके अंदर कौन सा राक्षस छुपा हुआ है. सो द और दैट मैन हु डिचेस समवन या चीट करता है जो. सो अ वेरी गुड क्लाइंट अगेन, नाउ शी इज एन एंटरप्रेन्योर, अ सोलो एंटरप्रेन्योर. तो ये है, ये लीगेसी रियल एस्टेट कंपनी है, ये है, ये स्मॉल मीडियम कंपनी है, ये है, ये एक ट्रेडिशनल कंपनी है जो अभी एक B2B कंपनी है जो अभी B2C में आई है. सो ये एक ब्रांड ऑलरेडी है. सो ये एक स्टार्टअप है. सो ये एक
लाइक मिड साइज कंपनी है, तो हर एक सेक्टर साइज देखो क्लाइंट्स का, इन साइज इन टर्म्स ऑफ कहाँ है उन लोग, ये एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है, ये एक मीडियम साइज कंपनी है, ये एक बड़ी है, सेक्टर देख लो उसका, देन अपनी सर्विसेज अभी हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं. लाइक आई हैव सीन दिस कंफ्यूजन इन मेनी brand Indians out there while I was discussing with few, and thus we are mapping out everything in detail. फिर आ गया मैस्कॉट. अभी मैस्कॉट में पीपल बिलीव आई यूज सम वेक्टर एलिमेंट्स, मिक्स एंड मैच एंड डिलीवर. नो, इट्स इलीगल. सो until unless the mascot is really sketched, thought, it's your brainchild, आपका खुद का thought होना चाहिए वो. Now we see some renditions. यहाँ पे कुछ मैंने renditions डाले हैं, and that the last one was the final one. But ultimately the management took a call कि ये idea अच्छी लगी, सब done हो गया, but we want things to go in live production. मतलब मुझे live shoot करना है, मुझे एक ऐसा ये नहीं जाना है, एक animated में नहीं जाना है. So pay nearby, a brand of, now this is a funded startup. पे नियर बाय, फंडेड स्टार्टअप में कैसे अप्रोच किया गया एक प्रोजेक्ट को. सो द ब्रीफ वाज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन. यूट्यूब पे कुछ कंटेंट क्रिएट करना था. इन लोग किराना वाले जितने भी हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं किराना वाले, उनको एम्पावर करते हैं बाय गिविंग देम एन ऐप जिसके थ्रू सारी बैंकिंग सर्विसेज उन लोग अपने किराना दुकान से ही अपने ग्राहक को प्रोवाइड कर सकते हैं. तो उनके दुकान में जब कोई भी जाएगा तो आप किराने का तो प्रोडक्ट्स खरीदोगे ही, प्लस आप जो तो वो प्रोडक्ट्स खरीदने के साथ साथ आप वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज, किसी को ट्रांसफर करना है, कुछ विड्रॉ करना है, तो वो सब भी आप एक ऐप के थ्रू आपका किराना वाला आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड कर पाएगा. प्लस किराना वाला ऑल्सो अर्न्स कमीशन, और इस बहाने और भी लोग उसके दुकान में आएंगे, और भी लोग आएंगे तो उसका दूसरा माल भी बिकेगा. सो दिस हाउ दे वर एम्पावरिंग द किराना वाला. And Money Bhaiya was the concept that we came up with. So money is money, and Money Bhaiya. So he is a big brother. He's like a big brother, Money Bhaiya. जो अब Money Bhaiya कह रहे हैं तो हम इंस्टॉल कर ही लेते हैं. So Money Bhaiya was trying to convince all the किराना वालास कि आप प्लीज ये इंस्टॉल करो, आपका धंधा भी बढ़ेगा, प्लस सबका भला भी होगा. So Money Bhaiya का कॉन्सेप्ट क्रैक हुआ, फिर जाके ये मैस्कॉट के कुछ रेंडिशंस बने, फिर वो लाइव प्रोडक्शन में हुआ. इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हम लोग ने कोई ऐसे मिक्स एंड मैच वेक्टर एलिमेंट वाला काम नहीं किया. सो दिस इज हाउ व्हेन एनी एंटरप्रेन्योर इन द रूम सीइंग दिस, when you are also getting your project done, get into the depth of what you are doing, and then get the copywriting and the designs done accordingly. Don't just think if it's creatively looking good, I have done my job, or the agency has done the job. So now, when you come to mascot, if there is somebody in the room who wants to design a mascot for their product, so even if you are buying something from online, see the licenses, see के commercials उसके कैसे हैं. It's always recommended to create from scratch, and this work is done by people who are good with character design, who are good with sketching, who know pre-production very well. मतलब जो पूरा sketching से लेके सब कुछ खुद से. In this, we onboarded a very senior guy who is into pre-production. Pre-production मतलब जो storyboarding, animatics, character design सब करते हैं. मतलब sketching और पूरा digital painting के through Photoshop में ये Wacom tablet या any tablet, pen tablet होता है जिससे पूरी sketching Photoshop में connect होता है, canvas create होता है, start sketching there on that itself. And then आप इसको Illustrator में import करके vectorize भी रखो, इसका ये वर्जन भी रखो, that's a different thing. But it's a completely new IP, intellectual property. It's not taken from somewhere. So it's like that. And thought came from the brief कि मनी भैया हैं जो पैसा कमाना सिखा रहे हैं शॉपकीपर्स को. So yeah. Now we'll cover this. I would take your permission to share a couple of things via screen sharing in social media, landing pages, websites, and 2D animated explainer videos. तो देखते हैं अभी ये क्या है एक एक करके. All right, so here we begin with social media, and we'll cover a couple of things: social media, websites, landing pages, and videos. So when you come about social media, so now you see so many people designs. I'm showing you a live social media page here, Instagram page as of now. एक page में आपको पूरा दिखा रहा हूँ.
जहाँ पे किस तरह हमने like an interior client now, अब हम interior पे आते हैं. I hope you are able to see this. Yeah. So how we helped him create the complete mood on the social media page. When we took over the page, it was not, I mean, more than 2,500 followers or something like that. We started creating some campaigns, the content, the interactive content that people like. And today it is somewhere, better than the previous position. And it's all social media में of course graphic designing लगती है, your strengths are required design wise, but it's more like how engaging your content is और आप अपनी content से अपनी audience को किस तरह interact करवा पा रहे हो. तो वो बहुत बड़ा यहाँ पे आपका चैलेंज होगा कंपेयर टू के कितना कलर या कितना फॉन्ट या एक्सेट्रा. सो इन सोशल मीडिया, as we progress further in the sessions, I will be covering lot of things कि आप अपनी ब्रांड के लिए किस तरह सोशल मीडिया कर सकते हो, in depth. And it's not about SIF graphics. Of course, they do play the role, but social media is, even if you are getting some social media mandate, until and unless उसको अपने क्लाइंट को जब तक वो एक नंबर या एंगेजमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा, it will be very difficult for them to be convinced with what works going on या क्यों मैं वो करूं. So you need, so इसके पहले इस पेज पे कोई ह्यूमन एलिमेंट्स नहीं थे, हमने ह्यूमन एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए, हमने कॉन्सेप्चुअल ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस करवाए rather than just showing project images only. How we can be little interactive, static से थोड़ा बाहर आते हैं. How, what is the inspiration behind every you know the furniture या color जो उन लोग use कर रहे हैं. So somewhere it was, we started with the video content also because we believed we need some video content जिससे consumers engage कर पाएंगे और interact कर पाएंगे rather than just the photos. We started giving the project like different positioning. So once you click on this, you tag the art, the artist, who is the artist. बहुत पुराना है ये दो, but still like जब तक उसमें इंटरेक्शन नहीं है, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनती है कि मेरा आगे का विजन क्या है, ये क्वार्टर को मैं क्या प्लान कर रहा हूँ. So accordingly you really plan out your social media. Your hygiene is important. Hygiene मतलब overall look and feel, your bio, your highlights, your links should be active, your hashtags किस तरह हैं, your content is important. Is the content engaging and interacting, or it's just about graphics? Your collaborations are important, which we even did that. मतलब हम लोग ने similar fashion में जो products design करते हैं उनके साथ हम लोग ने कुछ collaborations किए, जिससे cross collaboration से उसने भी हमारा promote किया, हमने भी उसका promote किया. So it's like, and even the shoot and the fun part is one of a brand Indian only executed the shoot, so we connected via sessions and that's how things took ahead. So where's that? So yeah, see this Milagro universe. So now they deal in similar products. मतलब ये interior designers नहीं है, but इनके पास ऐसे products हैं जो interior designers use करते हैं. So we somehow got the features done. We somehow got the collaborations done. He's the principal designer and founder of the company. So this is how आप इस तरह आप सोशल मीडिया एक मोटा मोटी में अभी सिर्फ हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं चीज़ों से. एंड सो अगर जेपेग भाई सोशल मीडिया कर रहे हैं तो जेपेग भाई क्या मेट्रिक ड्रिवन, कंटेंट ड्रिवन, इंटरैक्टिव सोशल मीडिया कर रहे हैं या जेपेग भाई सिर्फ पोस्ट्स बनाने में बिजी हैं. सो दिस इज वेयर योर थिंग इज लाइक, आप पूरा मैंडेट कर रहे हो कि किस तरह कर रहे हो, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज. एंड इवन इफ इट्स the holy post as you see over here. So every human has its own hue. We design spaces that reflects yours, hues and you. So wishes everyone a happy and safe Holi. So not necessarily you go with the festival greetings we kuch log kar rahe. So just a quick glance.
When you come to websites, the e-commerce websites are a different ball game. Western E-Mart, again, the symbol, yes, is done by us. We wanted a basket, then the roof. मतलब under one roof आपको अपने घर का जो सामान चाहिए इस जगह मिल जाएगा, because and then they like tweaked their font and typography. जो still not convinced, but yeah, like I'm just, so your website is the agenda. Website mein, this is an e-commerce website, like your e-commerce website where I can really go to. Now they are one of the biggest distributors of Amul as well. So once we click on it, you will see some Amul products which we can go and buy. So e-commerce websites की आप किस तरह एक, अभी ये पूरा लुक एंड फील, यहाँ पे जितने बैनर्स हैं, एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सारे यहाँ पे दिख रहे हैं. सो ये कहीं ना कहीं रिटेल, एफएमसीजी, ई कॉमर्स में कंबाइंड बातें कर रहा हूँ. सो ई कॉमर्स वेबसाइट is a different thing. A website that is just for information purpose, display website is a different thing. तो दोनों प्रोजेक्ट्स अपने आप में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं. नॉट नेसेसरी जो वेबसाइट्स बनाते हो वो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट भी पुल ऑफ कर पाए, बिकॉज ई एंड दिस कंपनी ऑल्सो हैज एन ऐप, एक खुद का उनका ऐप भी है जिसके थ्रू यू कैन बाय. बट app, e-commerce website app like Shopify is the platform which everybody uses. Every maximum, चाहे छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, maximum वो यूज करते हैं. WooCommerce और Shopify. I'll give you a doc जिसमें काफी ये सब deliverables होंगे मेरी तरफ से सारे, but अभी मैं as and when we are discussing मैं आपको बताते जा रहा हूँ. तो Shopify, WooCommerce is majorly used when you talk about, और Magento भी है जो कोडेड वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं. then you come to, so if you see काफी quirky डिजाइनिंग लगी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स इसकी कैटेगरी की वैसे डिमांड होती है तो हमने उस हिसाब से काम किया है. एंड देन यू कम टू योर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स, जो we have made one for the education institute. So the look and feel is maintained. उनकी brand colors को maintain रखा गया है पूरी तरह से. You can see the look. So right now the agenda is not to show their brands, इसलिए मैं उसकी in depth में नहीं जा रहा. But WordPress.com usually we use for such websites. WordPress.org, जिसमें आप खुद से डेवलप करके बना सकते हो अपनी websites, and there are great WordPress designers out there who help you to do it. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ to begin with. Then coded website, and वो अपने आप में एक subject है. But as an entrepreneurs in the room, not necessarily somebody who is designing websites can pull off an e-commerce project. E-commerce plus app is a different thing. Just an informative website, interactive website, a decent dynamic website is a different thing. So, and then the landing page. Now, when you come to landing page, just a second. Now landing pages are something that even you can design, customize on your own. काफी apps हैं जो मैं आपको suggest करूंगा जिससे आप खुद भी अपना landing page develop कर सकते हो. Landing pages are very much specific for one particular product or a service जो आप शायद अगर अपनी MVP रन कर रहे हो, मतलब minimum viable product. अभी जैसे ये हमने, जैसे मैं अभी मेरा ही दिखा रहा हूँ so that you can relate. Here we were just talking about one product which is a workshop, a 5-day workshop. You enroll, you learn, that's it. So not complete विज्ञापन website you see over here. वो अलग से हमने develop करी है. But here it's just about that, just about the 5-day workshop, nothing else. And किस तरह you are using this when आप digital marketing कर रहे हो. तो digital marketing में अगर आपको website, पूरी website बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, so just you can begin with the landing page and make sure कि वो landing page properly design किया गया हो. ये भी आगे हम in depth देखते हैं कि how do you really build this landing pages, जिससे अभी मैं पूरा introduction कहीं ना कहीं सारे हम touch points जो हैं and services जो हैं, जो एक designer है, designer को एक लैंडिंग पेज डिजाइन करने में भी आ सकता है. अगर वेबसाइट है शायद डेवलपर बाकी काम कर ले, बट एटलीस्ट यहाँ के ग्राफिक्स, लुक एंड फील इज योर जॉब. यहाँ के ग्राफिक्स, लुक एंड फील अगेन इन इंफॉर्मेटिव वेबसाइट इज योर जॉब. डेवलपर मे बी कैन हेल्प विद द अदर पार्ट if you are collaborating with a developer or if you are collaborating with a UI UX guy. In this,
The developer can help with the other part, but this Shopify and WooCommerce आपका backend solve करके देता है. मतलब आपका सिर्फ काम फ्रंट एंड डिजाइन में रह जाता है, पीछे उनकी पूरी सिस्टम रेडी होती है, आपको स्क्रैच से सब डेवलप नहीं करना पड़ता. एंड so that's how we saw social media. If you are doing a social media for entrepreneurs, make sure it's content healthy, not just about graphics. Collaborations are there, काफी चीजें हैं. I'll give you the complete format of doing this. If there's a website needs some parameters to be taken care of. E-commerce is a different thing. Dynamic website with information is a different thing. Then landing page is a landing page, just one landing page with one product or service being featured, and only one thing is talked about here. We are not talking about complete Vigyapan over here. So it's like that. Now, as you can see over here, we see an explainer video, like an explainer. I'll just play this, but an explainer video is a video which your clients would require to display their schemes, their services, their products, anything. But I'm not even getting into live production and all that now, because of course, but as a graphic designer, as a brand designer, your role will be ऐसा आ सकता है कहीं कभार के motion graphics and the video team is taking care of the rest, but graphics are expected from you, the complete strategizing is expected from you. So here we take a quick look on what does an explainer video look like. Why wait for a bank visit when you can bank smart with Kotak Smart Banking 24/7 e-lobbies? Now bank with ease and access a wide range of banking services at our e-lobbies. Deposit money, withdraw cash, some basic motion graphics done. Deposit a check, are designed and first many in more. Adobe Illustrator. Let's begin with our super then you machine take this to ATM. You can do After a lot Effects, more than just cash and then withdrawals. Premiere Pro for the final Print edit, mini depending on the statement. Get cardless cash withdrawal. Inquire about your balance. Check your account information. Withdraw cash. So 2D Make a animated checkbook explainer request videos and many more are very value-added much in and services. required by everyone. Want to deposit cash? Skip the queue This is done and for use one of our cash Kotak, deposit and withdrawal machines near you. Deposit cash of up to rupees 4 lakhs or 200 notes. You can now, as you see, it also has a voiceover. Voiceover is done by the voiceover artist. I'm getting many queries from many people that how do I manage this? How do I manage that? It's not your role. Your role is to be on, or if you are even taking up the project completely, you have to collaborate for the voiceover part. You have to collaborate for the video and the motion graphic part. Not everything can be pulled off by you. So it's like that. Now it depends. अभी आप imagine करो कितनी services हमें go through करनी पड़ रही हैं, and आप जब इतनी services और इतनी designs से juggle कर रहे हो, तो आप width में अभी focus कर रहे हो. So yeah, coming back to explainer videos, as you see, this is a 2D animated flat graphic with voiceover, but इसमें कोई use your debit card to deposit money. Get the amount credited to you. There is no like a Vivek animated here moving and talking to you. But in another video which I'll be showing right now, just a second. I don't want to complete the video. Yeah, okay, like this is just to give you a gist. So yeah, if you just want to. Our website at www.kotak. You can do some money. Character bank elements here, but he's not a wide range talking of to you or services moving. At our e-lobbies. So 2D animated explainer videos without character is what we are discussing here. Now, just a second. Now, all right. So now here we see animated explainer video, but with characters. मैं विश्व की सबसे बड़ी You see some motion in the characters. They are talking to you. एग्जीक्यूटिव पार्टनर बनने के आर्थिक लाभ हैं क्या? एक एग्जीक्यूटिव पार्टनर बनने पर आपको 20 करोड़ तक के नगद पुरस्कार एवं कई उपहार जीतने का मौका मिलता है. लाखों एग्जीक्यूटिव पार्टनर्स को हर महीने 100 करोड़ के भव्य कोष में से लाखों और करोड़ों जीतने का मौका मिलेगा, जो उन्हें पुरस्कार के रूप में वितरित किया जाएगा. और बहुत जल्द ये 100 करोड़ से बढ़कर 5. So yeah,
as you can see the voice over यहाँ पे भी है, graphics यहाँ पे भी है, but the character animation part is something which is an add-on. अभी ये करने के लिए the animator, the person should really know character animation as well. It's not just moving some, it's not just basic motion graphic. तो इसी तरह everything has a different requirement, and every service, like within 2D explain animated videos also you see with character, without character, with VO, without VO, demand क्या है project की. तो there are agencies जो इसी medium में specialize करती हैं. There are graphic freelancers, artists जो इसी medium में specialize करके आगे जब develop करना चाहते हैं खुद को, तो इसी तरह की team develop करते हैं जो ये पूरा project pull off कर पाए maybe. So are you getting this? So ऐसा है guys, and trust me, I better find my niche, or else you imagine providing like this services. Now this is where .jpeg Bhai was juggling, मतलब animated explainer video के लिए graphics with character, without character की अलग demand, Shopify based e-commerce based website, dynamic websites on WordPress की एक अलग demand, landing pages के लिए काफी apps हैं but उसका भी एक अलग requirement, social media, content driven social media, mascot आ जाते हैं तो mix and match नहीं, how are you really following the process, book cover, brochure, company profile, packaging design, emailers, identity design, copy. अभी तो इसमें मतलब कैसे अभी मर्चेंडाइज डिजाइन कर लो, देन एनुअल रिपोर्ट डिजाइनिंग कर लो, आपको लिस्ट तो ऐसे बढ़ती जाएंगी, स्टेशनरी डिजाइन एंड ऑल में आई एम नॉट गोइंग दैट अभी ज्यादा. इट्स जस्ट दैट यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ ईच एंड एवरी सर्विस एंड अकॉर्डिंगली यू टेक स्टेप्स अहेड. सो आई बेटर फाइंड माय नीश इन द नेक्स्ट सेशन. हाउ इज ही रियली फाइंडिंग हिज नीश, अभी वो इम्पोर्टेंट है. उससे भी पहले वो थोड़ा और एक्सप्लोर करने वाले हैं कि एजेंट टाइप्स ऑफ एजेंसीज, अभी ये सर्विसेज किस तरह एजेंसीज प्रोवाइड कर रही हैं, कमर्शियल्स क्या है, एंड किस तरह मैं मेरी नीश फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करूं. बट बिफोर वी रियली यू नो give some time to .jpeg Bhai to think on it. I'll quickly show you the thought and the campaign extension, मतलब just for your idea. Okay, now MICL really, this is not, the identity is not done by us, this is the company. So we came up, the brief was simple, that we are coming up with the tallest tower, and tallest tower है और mangroves के पास है, mangroves trees and mangroves और नदी के पास है, and the tallest tower है. So how do we really show that? So triangle depicts the growth and the tallest tower, the mangrove, the stems which you can see here. Overall look भी बहुत earthy tones और towards nature रखा है. The window with a view, because view बहुत सही होगा वहाँ से, tallest भी है plus mangroves, lush green, and जहाँ mangroves होते हैं पानी होता ही है, so नदी. Then you see the identity. अभी Suminagashi art was used as the design element for texture in the entire campaign. तो एक लुक एंड फील डिजाइन किया. ये मैं एक रफ कट आपको बता रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड के आइडेंटिटी सोचने के बाद उसका एक्सटेंशन किस तरह किया जाता है. कलर स्कीम फॉर द कैंपेन विल बी दिस. सो ये आपने कहीं ना कहीं ब्रोशर के उस पर देखा था कि हाउ वी क्रिएटेड दिस आर्टवर्क फॉर द ब्रोशर. सो उसी आर्टवर्क को एंड उसी एलिमेंट्स को प्ले किया है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल. देन हाउ विल यू टारगेट डिफरेंट कंज्यूमर्स, जैसे इन्वेस्टर और ब्रोकर के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन होगा, एंड कंज्यूमर के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन होगा. सो इन्वेस्ट, सो वही एलिमेंट को किस तरह हम आगे आइडेंटिटी में से हम जो एलिमेंट पिक करते हैं ट्राइंगल, उसी को आगे किस तरह हम यूज कर रहे हैं. सो these are concepts like which I am just sharing with you. ये फाइनल as such मैं वो नहीं बता रहा, बट एक कॉन्सेप्ट किस तरह एक्सटेंड किया गया है. सो इन्वेस्ट वेयर योर मनी ग्रोज लाइक द लश मैंग्रोव सराउंडिंग इट. प्रोडक्ट का भी यूएसपी आ गया, जिस टारगेट ऑडियंस से बात करनी है वो भी हो गया, इन्वेस्ट पे ध्यान जा रहा है. सो या these are just rough concepts. ये किसी मतलब बैनर या किसी स्पेस ब्रांडिंग या इसी के लिए जस्ट सम रफ कॉन्सेप्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड द लुक एंड फील एंड द आइडेंटिटी. Hypnotic city views that will make your evenings magical. So captivating view. So it's like that. I mean, सेम लोगो एलिमेंट को एक्सटेंड करके किस तरह एक वहाँ पे स्टडीड स्काईलाइन व्यू दैट इंस्पायर्स द आर्टिस्ट इन यू.
मुझे बस एक क्विकली आपसे शेयर करना था ये कि because I've seen many like again I've been getting queries on what do you really mean by these extensions and आप किस तरह लोगों को एक्सटेंड कर पाते हो. तो जब आप डिजाइन करते हो आइडेंटिटी, उसकी एक्सटेंशन कैसी होगी वो भी आपको सोचते हुए करना पड़ेगा. मतलब अभी यहाँ पे बैठ गया, अभी इसी लोगों का मैं इंस्टॉलेशन करवा सकता हूँ कहीं गार्डन में, ऐसा मैं बनवा सकता हूँ एलईडी लाइट्स के साथ. इट विल लुक ब्यूटीफुल. सो गाइज, some look and feel किस तरह it will, like the cover page will only, if you are doing a front page ad, it will be just like this. That's it. Clean, invest where your money grows like lush mangroves surrounding it. Invest in the Raja Cruiscape, East Vikram. So that's it. Then here, it will be just enchanting mangrove view that inspires the poet in you. Because the views are so captivating that अंदर का artist जाग जाएगा. So a poet, thus a feather. I'm sorry, yeah, thus a feather over there. Feather say if she's writing and then she's sitting on that poet in you. तो इस तरह आपको आउटडोर, उसका प्रिंट, उसका ब्रोशर, so that's how you think strategically irrespective of the medium that we are working on. But as you saw, like for creatives in the room, I guess yes, let's explore, no doubt. But जब तक आप अपना X factor नहीं find करोगे, pitching a high client and telling them कि this is my X factor and that's why you have to pay me for this, थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, because you yourself need confidence in you before you pitch them कि yes, I'm confident, because आपने वो day in day out कर रहे हो, आपकी speciality है, तो ही वो कर पाओगे. So .jpeg भाई अब थोड़ा export हो रहे हैं high resolution में, देखते हैं आगे कैसे होते हैं. And for like every entrepreneur in the room, businesses in the room, I want to tell them कि guys, I mean, एक एजेंसी या एक बंदा सब कर पाए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, not possible, but collaboration होता है, अकेला नहीं कर पाता, टीम वर्क होता है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है. So कुछ लोग अगर क्लेम करते हैं हाँ सब हो जाएगा ना, ये भी कर दूंगा ना, वो भी कर दूंगा ना, because then your project should not go for a toss. And copy writing अलग अपने आप में skill है. There are agencies who have everything under one roof, but then you should really check whether what's the work like, will they be able to justify the project. So yeah, and as you saw, ये जो हम services discuss कर रहे थे, इसी को आगे और in depth cover करते हैं कि हम as a entrepreneur हर एक सर्विस को किस तरह अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए यूज करें. So let's see how can we build a business, like complete journey from business to a brand, and let's see how .jpeg Bhai is finding his niche in the next session. Cheers guys.